Assalamu alaikum. In this tutorial, we will discuss the method of normalization that we use in our relational data model. Basically, in this tutorial, we will discuss what is normalization and how, where it is used, and what are the mechanism of normalization. So, let's start it. The process of normalization, first we define it, the process by which we efficiently organize data to achieve these goals. Eliminating redundancy, ensuring data is stored in the correct table, making data maintenance easier, insert, update, delete. Basically, we do normalization for these three purposes. These are the basic purpose for which we do normalization of our data. Or eliminating redundancy means eliminating or removing duplication from our data that we are going to insert in database. Ensuring data is stored in the correct table, making sure that either our data is in correct table or not. Making data maintenance easier, insert, update, and delete. For data maintenance process, we do normalization. Maintenance process basically insert, update, and delete, making this process or procedure easier. For this purpose, we do normalization, or the goals of the normalization. Types or level of normalization. Normalization is basically done in three steps. These are known as first normal form, second normal form, third normal form. Normalization डिफरेंट स्टेप्स में की जाती है और ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों स्टेप्स आप हर डेटा पर पूरे के पूरे अप्लाई करें. हो सकता है बाज़ डेटा फर्स्ट जो स्टेप है वो परफॉर्म करने के बाद ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाए या सेकंड नॉर्मल फॉर्म की ज़रूरत ही ना पड़े. सो चेक करते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है. First normal form says that there are no repeating or duplicate fields. Each cell contains only a single value. Each record is unique, identified by a primary key. First normal form said that data or table or relational table or relational relation is in the first normal form when there is no repeating or duplicate fields. Each cell contains only a single value, means every cell has a single value, no multi-value attributes are there. Each record is unique and identified by a primary key. Here's the example of data item. There is a relation having four attributes: item, colors, price, and text. T-shirt. Item is the name of the items that are t-shirt, polo shirt, t-shirts, sweatshirts. Okay, colors, their price, and tags on these items. Okay, table is not in first normal form because table first normal form में नहीं है because there are multiple items in the color field. Multiple items in the color field means this color attribute is multi-value attribute. Multi-value attributes are those attributes in which have multiple values for a single record, single item. टी-शर्ट है तो उसके कलर हमारे पास रेड या ब्लू में हो सकती है. पोलो है तो रेड और येलो में अवेलेबल है. टी-शर्ट रेड और ब्लू में अवेलेबल. स्वेट शर्ट ब्लू ब्लैक में अवेलेबल है. So this table is not in the first normal form because of this attribute. Duplicate record, no primary key. Duplicate records कैसे हैं?
अब यहाँ पे टी शर्ट आपके पास 2 टाइम आ रहे हैं। प्राइमरी की नहीं है, जो प्राइमरी की का एट्रीब्यूट नहीं है जो इस टेबल को या बाकी के जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके। इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? बाय रिमूविंग द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स एंड आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। ओके, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को कैसे ख़त्म किया यहाँ पे कि टी शर्ट, रेड, प्राइस और टैक्स। एक रिकॉर्ड हो गया टी शर्ट जो कि ब्लू कलर में है, उसकी प्राइस इतनी है और टैक्स इतना है, यह हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड हो गया। जबकि इस टेबल में ये दोनों एक ही रिकॉर्ड में कलर्स की वैल्यूज डिफाइन हो रही थी। अब there is no attribute having multi-value attribute which have multiple values. T-shirt blue है, again polo red, price this, text is this. Polo yellow, price is this and text is this. Sweatshirt and again it's the normal form, first normal form because there's no multi-value attributes। और प्राइमरी की एट्रीब्यूट के लिए क्या किया गया है कि यहाँ पे इन 4 एट्रीब्यूट्स में से कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं था जिसे हम एज अ प्राइमरी की इस टेबल का ले सकते। तो उसके लिए आइटम, और कलर दोनों की कॉम्बिनेशन से प्राइमरी की बनाकर प्राइस और टेक्स्ट को आइडेंटिफाई किया गया है। मीन्स here the primary key is the combination of two attributes. This is known as the composite primary key which consists on two attributes. This is item and color. अब टी शर्ट रेड है तो उसकी प्राइस ये होगी। टी शर्ट ब्लू है तो अगेन उसकी प्राइस ये है। इसी तरीके से पोलो रेड की कॉम्बिनेशन है, पोलो येलो की कॉम्बिनेशन, स्वेट शर्ट ब्लू की कॉम्बिनेशन और स्वेट शर्ट ब्लैक की कॉम्बिनेशन। So now this table is in the first normal form because there is no multi-value attributes. Every cell contains single value for the attributes and records can be uniquely identified with the help of these two attributes. So item and color is now the primary key of this table. प्राइमरी की भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया है और हर रिकॉर्ड की यूनिक वैल्यू भी यहाँ पे मौजूद है। कन्वर्टिंग द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इनटू द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके क्या रूल्स हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के? एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड बाय फुली फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द एंटायर की, नॉट बाय ओनली part of the key. All non-key fields depends on all components of the primary key. Guaranteed when primary key is a single field. Fully functional dependent, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। What is fully functional dependency and partial dependency? Functional dependency exists when one attribute can uniquely determine another attribute in the same table. If X function determines Y, then this is noted by this. Functional dependency means when non-key attributes dependent on the primary key that uniquely identify these attributes. Example क्या है? Product है, name है, तो एक प्रोडक्ट के नेम से उसकी प्राइस और मैन्युफैक्चरर का पता लगा सकते हैं। मीन्स प्राइस एंड मैन्युफैक्चरर्स आर फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द नेम। पर्सन है तो उसके अगर एसएसएन है तो उससे नेम एज का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या सीएनआईसी नंबर होता है, उससे हम पर्सनल डिटेल निकाल सकते हैं। सो नेम एंड एज इज डिपेंडेंट ऑन द एसएसएन नंबर। कंपनी नेम, स्टॉक प्राइस, प्रेसिडेंट। कंपनी का नेम अगर पता है तो उससे हम स्टॉक प्राइस, उसके स्टॉक में क्या प्राइस है और उसका प्रेसिडेंट कौन है वो हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। सो स्टॉक प्राइस एंड प्रेसिडेंट आर कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द नेम ऑफ द कंपनी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एन एट्रीब्यूट इज फुल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन अनदर इफ इट इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन दैट एट्रीब्यूट एंड नॉट ऑन एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट।
फॉर एग्जांपल कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी हमें मालूम है तो उससे हम ग्रेड का पता स्टूडेंट के लगा सकते हैं। एक इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हम ग्रेड का पता लगा सकते हैं। मींस के ग्रेड अगर स्टूडेंट आईडी मालूम है तो हम तब भी किसी एक कोर्स का ग्रेड मालूम नहीं कर सकते स्टूडेंट के लिए जब हमें कोर्स आईडी नहीं मालूम होगी किसी कोर्स की जिसमें वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होगा। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है? पार्शियल डिपेंडेंसी मींस के here grade is functionally dependent, fully functionally dependent on both of these attribute, not on single attribute। मींस के कोर्स आईडी एक अलग एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी अलग एट्रीब्यूट, दोनों मिलकर ग्रेड्स को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, जबकि ग्रेड सिर्फ स्टूडेंट आईडी की वजह से या कोर्स आईडी की वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। This is known as full functional dependency। Partial dependency क्या कहती है? Partial dependency occurs when a non-prime attribute is functionally dependent on the part of the candidate key। The second normal form eliminates the partial dependency। Partial dependency means when partial dependency किस तरीके की, अगर ग्रेड्स दो एट्रीब्यूट से मिलकर आपकी प्राइमरी की बन रही है और जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ग्रेड स्टूडेंट आईडी की वजह से आइडेंटिफाई हो सकता और कोर्स आईडी की ज़रूरत ना होती तो दिस इज नोन एज द पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटम की वजह से हम प्राइस और टैक्स को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स ये जो हमारे पास टेबल है here price and text depend on table not on color। these two non-key attributes only dependent on the item which is the part of the primary key। primary key यहाँ पे दो एट्रीब्यूट से मिलके बनी हुई है, आइटम और कलर से, और प्राइस और टैक्स इसी टेबल के नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो प्राइस और टैक्स सिर्फ आइटम की वजह से भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं अगर कलर की ना भी मेंशन हो तो, क्योंकि कलर चेंज हो भी तो स्टफ एक हो, एक आइटम सेम आइटम का कलर चेंज होने से उसकी प्राइस इतनी चेंज नहीं होती। सो दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी जब नॉन की एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पर डिपेंडेंट हो, दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, उसे हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए क्या किया गया है कि इस टेबल को स्प्लिट कर दिया गया है टू टेबल्स में। आइटम की वजह से प्राइस और टैक्स आइटम पर डिपेंडेंट थे तो उनकी एक अलग टेबल बन गई और आइटम और कलर की अलग टेबल बन गई। नाउ there are two tables of the first table। item color यहाँ पे ये दो एट्रीब्यूट्स हैं एक टेबल के, तो और दोनों ही प्राइमरी की का काम करेंगे, और यहाँ पे आइटम एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है और यहाँ पे आइटम प्राइमरी की का हिस्सा भी और एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। फॉरेन की इज यूज्ड फॉर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू आइटम्स। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स क्या हैं? सेकंड नॉर्मल फॉर्म प्लस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नो नॉन की फील्ड डिपेंड्स अपॉन अनदर। ऑल नॉन की फील्ड्स डिपेंड्स ओनली ऑन द प्राइमरी की। मींस in third normal form we remove transitive dependency। Transitive dependency exists between or among non-key attributes। Transitive dependency किसे कहते हैं? When an indirect relationship causes functional dependency, it is called transitive dependency। If P dependent on Q and Q is dependent on R is true, then P dependent R is the transitive dependency। Example: item price is dependent on item, or item can identify price
एंड प्राइस कैन आइडेंटिफाई टैक्स, क्योंकि टैक्स प्राइस की बेसिस पर लगता है, कीमत की बेसिस पर लगता है, आइटम की बेसिस पर टैक्स नहीं लगता। तो टैक्स प्राइस पर डिपेंडेंट है और प्राइस आइटम पर डिपेंडेंट है। दिस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मीन्स टैक्स डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है आइटम पर, टैक्स पहले प्राइस पर डिपेंडेंट है और प्राइस जाके आइटम पर डिपेंडेंट है। प्राइस और टैक्स हमारे पास दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरीके की इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। Tables are not in third normal form because text depends on price, not on item. इस टेबल की वजह से this data is not in the third normal form. थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, अगेन इन टेबल को स्प्लिट कर दिया जाता है, एक थर्ड टेबल आ जाती है। प्राइस और टैक्स की एक अलग टेबल बन जाएगी जिसमें प्राइस एज अ प्राइमरी की काम करेगा और यहाँ पे प्राइस एज अ फॉरेन की काम करेगा। यहाँ पे आइटम एज अ प्राइमरी की काम करेगा और यहाँ पे आइटम एज अ प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों का काम करेगा। सो दिस इज द steps of 3 steps of normal form. इसके फर्दर नॉर्मल फॉर्म्स भी हैं, बायो नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म अप टू आई थिंक फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक ये जाता है, लेकिन हमारे कोर्स का जो पार्ट है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही है। सो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस for major goal of normalization is to remove redundancy, to remove duplication and making data efficient and consistent in a database. दूसरी एक बात याद रखिए कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जितना भी टेबल्स बनेंगी, जितनी भी टेबल स्प्लिट्स होंगी, जितनी भी स्टेप्स परफॉर्म होंगे नॉर्मलाइजेशन के, उसमें डेटा लॉस ना हो। So this is the major aim of the normalization कि जो डेटा होगा उसको आपने नॉर्मल फॉर्म में लेके तो आना है, लेकिन उसमें से कोई डेटा लॉस नहीं होगा। कोई रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड पहले टेबल में मौजूद होगा वो लास्ट तक किसी न किसी टेबल में किसी न किसी सूरत में उसका डेटा मौजूद होना चाहिए। डेटा की डिलीशन नॉर्मलाइजेशन में नहीं होगी। So these are the major aim of the normalization that we do in the database. Thank you so much. If you have any query, you can contact me. Allah Hafiz.